दिस वाज द यस्टरडेज शेड्यूल। ठीक है, कल तक हमने क्या पढ़ाई की है ये अब हम समझते हैं। फाइन। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क्स एंड we started off with understanding the concept of आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग का जो फेज वन था, ठीक है, वो ये था कि गिवन आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। एंड द सेकंड थिंग वाज टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस, मतलब क्लासेस कि कौन सा क्लास कौन से रेंज में आता है। ये फेज वन था। फेज टू कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा? फेज टू स्टार्ट हुआ है कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन, इफ आई वांट माय आईपी एड्रेस शुड कम्युनिकेट, मैं जैसे ही, ठीक है, किसी मशीन का आईपी एड्रेस देता हूँ, ये तुरंत कम्युनिकेशन के लिए तैयार होता है, या यूं कहें कि ये तुरंत आर्प मैसेज भेजने के लिए तैयार होता है। फाइन। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? Okay, it is possible because IP addressing was introduced for the purpose of communication only. And in order to perform the communication, two machines having the IP address are able to communicate with each other if and only if they belong to the same network. अगर एक ही नेटवर्क में बिलोंग करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया था ऑफ मोबाइल नंबर्स। Both the mobile numbers, okay, let us say the first mobile number and second mobile number will able to connect and communicate each other if they belong to the same country code. So without dialing the country code also I will be able to connect. ठीक है, मैं बिना 91 को डायल किए हुए भी किसी भी मोबाइल नंबर को कनेक्ट कर सकता हूँ। फाइन। सो दिस इज व्हाट द पॉसिबल। सर्टेनली आईपी एड्रेसिंग में भी उसी तरह है। दो आईपी एड्रेसेस आपस में तभी कम्युनिकेट करेंगे इफ दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। नाउ द चैलेंज वाज दैट कि गिवन आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट्स कहाँ से निकाले। ओके, इट वाज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द नेटवर्क। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क बिट्स? So in order to identify that, we have taken the concept of subnet mask, and this is the definition of subnet mask. Fine. So till yesterday we have identified that. ठीक है, तो हम गिवन आईपी एड्रेस में, ठीक है, सबनेट मास्क करता क्या है? सबनेट मास्क गिवन आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट्स कितने हैं वही आइडेंटिफाई करता है। अब ये किस तरह से बोलते हैं? हाउ एम आई एबल टू से टेक द आईपी एड्रेस and tell that each belongs to which class. So it's a class C network, and the, okay, subnet mask of class C is 255.255.255.0. Fine. And if this is the case, then okay, here we identified that 3 bits are in network. So with the help of subnet mask, we are identifying the network bits. So 3 bits are in the network, and certainly we are doing this part over here. Okay, certainly we are performing the AND operation over here. So what is that we have done? So initially we have converted this IP address to binary. This is what it is. We have converted this subnet mask to binary. This is what it is. And we are performing the AND operation. Now what is AND operation? AND operation is nothing but binary multiplication. Fine. And after performing the AND operation, whatever the resultant is there, the resultant is what we are calling as the network bit या network address. तो इसे हम network address कहते हैं. Okay, we call it as a network address. Okay, and certainly, okay, this is also we call it as a network address. Fine. We have also performed the AND operation for these two IP addresses also. इन दोनों का भी हमने AND operation करके देखा है, और इन दोनों का AND operation करने के बाद, ठीक है, we have performed it with handy process. तो किस तरह से handy किया है? 255 को 1 से कन्वर्ट किया। So 172 multiplied by 1 is 172. 16 multiplied by 1 is 16. 15 multiplied by 0 is 0. 43 multiplied by 0 is 0. So this is the AND operation of this. Certainly यहाँ पे भी हम उसी का AND operation करते हैं.
Fine. And after this, we find out that both the IP address are able to communicate with each other if they belong to the same network. अब प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि दूसरे नेटवर्क के मशीन्स को अगर पिंग करना है, ठीक है, तो क्या कम्युनिकेशन होता था? नहीं होता था। स्विच में तो ये पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि स्विच बना ही इसलिए था कि एक ही नेटवर्क के सभी मशीन्स को कनेक्ट करे। तो अगर हम चाहते हैं कि दूसरे नेटवर्क के मशीन को अगर हम कनेक्ट करें या कम्युनिकेट करें, तो हमें राउटर की जरूरत लगती थी। तो राउटर वो डिवाइस है जो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। Note that in the yesterday's class, I heard that there is some confusion with the routers. Okay, many of them are trying to understand the definition of router as it is connecting two machines. No, it is connecting two networks, and when I say two networks, what do I mean? These two computers can able to communicate with any two computers across the network. तो दो कंप्यूटर का नेटवर्क है। अगर यहाँ पे 25 कंप्यूटर्स रहते थे ग्रीन नेटवर्क में और यहाँ 25 कंप्यूटर रहते थे ऑरेंज नेटवर्क में, then 25, all the 25 used to communicate with all other 25. So he is not connecting the computers, he is connecting the networks. And of course, you can connect two routers to this, but what is the frequency of this? You can connect only two computers. But here, when we connect this to a switch, in this switch, we can connect 24 computers. So that's the difference. Okay. Of course, you can connect two computers and you can perform the communication, no doubt in that. But if you want to increase the number, if it is in bigger scale, then we connect it with switch. Yes, कुछ doubt था किसी को? यस सर, पर वो स्विच वाले केस में जो वीलेन मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे आपने अलग वीलेन यूज किया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है, यहाँ देखें, ये अपना वीलन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन आईपी एड्रेस को देखें, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.1, ठीक है। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आएगा? अगर मैं इसका एंड ऑपरेशन करता हूँ, ये आईपी एड्रेस 192.168.1.0। ओके, 192.168.1.0, ठीक है। ओके, ये P1 का है। P2 का आईपी एड्रेस देखें, P2 का आईपी एड्रेस क्या है? 1.2, सबनेट मास्क है। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आएगा? सेम सर, सेम है। P3 का देखें, P3 का क्या आएगा? सेम आएगा। P4 का देखें, सेम आएगा। P5 का देखें, सेम आएगा। P6 का देखें जो S2 में कनेक्टेड है, 1.6 सेम आएगा। सो VLAN क्या है फिर? VLAN क्या है? VLAN दो नेटवर्क को क्रिएट करता है, ठीक है, एक ही नेटवर्क में दो अलग अलग नेटवर्क बनाता है। ओके ओके सर, गॉट इट। ठीक है, यहाँ देखिए सबका नेटवर्क एड्रेस एक ही है और सबके नेटवर्क एड्रेस अगर एक है तो एक नेटवर्क में है। तो इस एक नेटवर्क वाले के मशीन्स को हम अगर अलग करना चाहते हैं तब हम VLAN यूज करते हैं। Yes, sir, got it. Okay, all of you got the difference what it is? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Okay, so this is what VLAN is. Fine. So this okay is usually अपन अगर सब एक ही नेटवर्क में आते हैं तो सभी को कम्युनिकेट करते हैं। हम चाहते हैं कि अब कम्युनिकेट ना हो कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, so we can put it up with the case of VLAN, ठीक है। तो VLAN के जरिए हम इसे अलग कर सकते हैं, ओके। जबकि यहाँ जो केस है ये VLAN से अलग है। यहाँ पे ठीक है कनेक्टेड ही दो अलग अलग नेटवर्क है, तो VLAN करके भी कुछ फायदा नहीं है। फाइन, सो this is where we do, this is where the VLAN concept comes into picture. Fine, so ये होता है, ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। Sir, yes? sir, suppose sir here there are two network, green and gray. So suppose sir in green network
there are two types of network, layer 2 and layer 3. Hmm. Then he will communicate with, how will he communicate with each other? This was the concept, na? One of the IP addresses 2.25 and one of the IP addresses 3.25. Will they both able to communicate? Sir, this is same network ना? Uh-huh. But I want that first वाला मान लीजिए कि layer 3 पे है, second वाला layer 2 पे हो, ऐसा करके. Sir, तो he wants to say layer नहीं class बोलना चाहता है शायद. Layer या class? Because layer 2 is different बेटा. Class बोलना चाह रहे हो? class. लेकिन switch में एक ही class maintain कर. ठीक है, देखेंगे. ठीक है, इसे कनेक्ट करके देखते हैं. Okay. So you want that? Okay. एक ही क्लास के चाहिए या अलग-अलग क्लास के चाहिए? अलग-अलग क्लास के. ठीक है, चलो. 10.10.10.10. ओके. और यहाँ पे देता हूँ 172.16.4.1. ओके, करेक्ट है. आप कहना चाहते हो क्या स्विच अब इन दोनों को कम्युनिकेट कर पाएगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ठीक है, आई असाइन द आईपी एड्रेस. दिस इज द सबनेट मास्क. ठीक है, आई kept it as it is. I assign the IP address to this. Okay, 172.16.4.1. Okay, this is the subnet mask. Now I have assigned this. Okay, now from 10.10 let us try to communicate. Yeah, let us try to ping. Okay, 172. So ping 172.16.4.1. Okay, will it able to ping? No. Both the machines are only able to communicate if they belong to the same network. That was the intention of IP addressing. Okay, sir. Okay, if they are in the same class, if they are in the same network, then only the machines are able to ping each other. अगर आप assign करते हैं तो switch क्या करता है? Switch is only connecting. So look at the features of the switch, which I have told you. Okay, feature of the switch is that, okay, it is connecting different devices. So both the devices are connected, but is communication is possible? No. No Fine. sir. Communication will not at all be possible because okay, they belong to different network. Switch में communication नहीं होता इसीलिए हम लोग router यूज करते हैं. Absolutely, that's the reason we connected with the router. So what if in this situation we connect a router? In this situation, if we connect a router, then Not sir, keeping the switch itself and then connecting the router to the switch, and then is there a possible that okay, then you are telling the reverse yoga process. Okay, and then you are doing the strategy of Baba Ramdev, okay, who is walking from hands. And it is possible, but not at this moment. We have to perform something called as inter-VLAN routing. That is not the concept of CCNA, that is a CCNA. Okay, maybe when we get free time, we will have a discussion on this. Okay, this process is called as router on a stick. Okay, on internet, search this process. Router on a stick. Pardon, sir? Router on a stick. This, okay, this problem is called as router on a stick. Just check. And cable name, sir? Cable is not an issue. You can connect any cable. Cable is not an issue. The concept is router on a stick. We can do this. ठीक है, इसके कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग. ये जनरली यूज नहीं होता क्या? कुछ कुछ केसेस में होते हैं, कुछ कुछ केसेस में ही होते हैं. ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आप ये समझ सकते हैं. थोड़ा एडवांस टॉपिक है, अभी के लिए नहीं है, मैच्योरिटी उतनी नहीं है, बट ये कर सकते हैं. चाहे तो राउटर ऑन अ स्टिक में सर्च करें, आप कर सकते हैं. तो बेसिकली दो वर्चुअल नेटवर्क्स बनाना है. We have to create two virtual networks, okay, in this part. So which is the interface that it is connected? From switch to R2, identify the interface.
and depending on that interface we have to create a virtual interface. Yeah, we call it as sub interface. Okay, and in sub interface we are connecting one of the network to 10.0, and in another sub interface we are connecting it to 172.16.0. so on that, then these both machines will able to communicate with each other. It is possible. Okay, sir. Thank you. Okay, you have to create a sub interface, but as I said, okay, you are saying that you, okay, for Ramdev Baba to, okay, from now onwards you have to walk from a hand, not from a leg. Okay. तो उल्टे हाथों से हेलो आप चलने की बात कर रहे हो. It is possible, but okay, जब सीधे हाथ से ही चल, ठीक है, पैर है तो क्यों ना सीधे पैरों से चले. Okay, let's follow the हाँ straight सर, path. जैसे कि आपने Okay, जो why ये are we पहला trapped into डायग्राम बना such रखा है things? इसमें Okay, we will look डिफरेंट into it, but not under lecture. It's एक okay. राउटर It's कितनी good that you are कितनी asking the क्लासेस को ज्वाइन questions, करा सकता है ना? and it's good that this batch is asking. So, okay, what you say? Uh, Okay. different questions. I'm happy for that. हाँ, बोलिए please. ये स्विच के ऊपर है बच्चा, ठीक है. आप चाहें तो और एक मशीन लगाएं, ठीक है, और 192.168.5.2 करें, ठीक है, और ठीक है, इसे कनेक्ट करें. और अगर आप चाहते हैं कि तीनों मशीन्स, तीनों अलग अलग आईपी एड्रेसेस के, तीनों अलग अलग क्लासेस के हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, लेकिन इंटरफेस एक ही है, Yes, sir. ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ट्रिक करना पड़ता है, ठीक है, Okay. थोड़ा क्या बोलते हैं, ओके, आप और बोलते हैं सर ना, ये आप जो ये अपने वाला इंटरव्यू में डायग्राम थोड़ा है बहुत हमारा झूठ जो तो इसमें बोलते हैं ना, राउटर तो वाला है इसे R1 थोड़ा वाला, इसमें झूठ हम बोलना जैसे पड़ता कि है. यहाँ पे दो हमें क्लासेस के राउटर आईपी दे के रखे हैं, अंदर क्लास 3 2 और क्लास 3, अलग अलग सब और इसमें हम इंटरफेसेस क्लास बनाने 1 का पड़ते हैं, आईपी एक मतलब नेटवर्क क्रिएट करके छोटा सा, और क्लास 1 तीनों आईपी का अलग वो भी अलग कनेक्ट सब करके पिंग करा इंटरफेसेस सकते हैं बना ना के आपस में तीनों तीनों को नेटवर्क अलग को. अलग आईपी एड्रेस देके हम एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. Yes, sir. ओके ओके ओके. तो करा सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ कि ठीक है, पहले इस प्रोसेस को समझे, ओके क्योंकि ठीक है, वॉट एवर आई हैव टोल्ड इज जस्ट द हाफ पार्ट ऑफ द ट्रूथ. ओके आपको जो हकीकत, ठीक है, नेटवर्क के बारे में जो पता है वो बस आधा सच है. पूरा सच शायद आज पता चलेगा. क्यों? क्योंकि अभी बहुत से राज हैं इसमें. देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ हिडन ट्रूथ इन दिस, हिडन पार्ट इन दिस, which I am today trying to explore that. And once यस everything सर. is explored, then you have all the time to make such experiments. Okay, because okay, see, when we are sending a message, let me tell you one part. When we send a message from 2.25 to 15.43, you notice that okay, the IP address is there. But have you looked at the MAC address? Okay, ओके. ये MAC address किसका है? Whose MAC address is this? Are you aware of it? सर ये आई So थिंक whenever we जो are sending a message, layer 2 दूसरी and क्लास layer का 3, एड्रेस layer जो 3 वहाँ and पे layer 2, क्लाइंट both है the इसका है information has to be added, इस which means the IP यस and सर. MAC address has to be added. But okay, let us say source MAC address is the MAC address of this green machine, नो 2.25. सर Destination इसका MAC नहीं है address सर. किसका है? Whose MAC address ओके. is mentioned in destination? ये वाला. ठीक है. What's सोर्स the का तो MAC ठीक है address? सर दिखा रहा है, लेकिन ये इसका 0008 जो दिखा रहा है F30441. That's the hidden truth. ओके. Okay, सोर्स and this is what I have to सोर्स explain. मैक एड्रेस था. Source MAC address देखना है. That's what I said. There are many things which has to be done. ठीक है, यही तो आज जानना है. This is what we are learning today. Fine.
Chalo. So as I have said that, so where was I? Yeah. So I was trying to identify. Yeah, we are trying to explore the features of a router. So here are some of the features of a router that it is helping me to connect different network. Each interface of a router is a computer. Fine. So that's the reason each interface of a router we can assign the IP address. Each interface of a router generates a ARP message, and each interface of a router broadcasts this ARP message. So it's typically behaving as a computer. So that's the reason I said it is acting as a computer. And the best part is it has the ability to read the IP address. So how is this doing? Okay, so whenever the message has to be sent, let us say this is the message, and the first thing is that this machine, which is 2.25, literally don't know how to reach to 15.43 because he knows only about the green area of green network. ये जो 2.25 है, इसे यूं कहें कि ये कुएं का मेंढक है, जो ठीक है कुएं के पास ही अपनी दुनिया है, कुएं में जितनी सराउंडिंग्स है उसे पता है कि दुनिया उतनी ही है. फाइन. तो उसके दुनिया के अंदर हम जो उसके ठीक है जो भी चीज बोले वो ढूंढ के देगा, लेकिन हम उसको कुएं के बाहर जाने के लिए बोले तो वो ठीक है एक हिसाब से चरमरा जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जाना कैसे है. तो अगर हम नेटवर्क के बाहर कोई चीज हम पिंग करने के लिए बोलते हैं, उसे पता नहीं है कि बॉस ये है कहाँ. ओके, उसे पता नहीं है वो है कहाँ. सो in this situation, okay, we inform this machines, this end machines, okay, that whenever you have to reach to a different network, you first reach to the end point या to the exit point of the network. तेरे राउटर का जो exit point है, तेरे नेटवर्क का जो exit point है वहां पे जा. तो इनका exit point कहाँ पे है? इनका exit point है राउटर जो R1 है. तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे लगा के बोलते हैं कि तू नेटवर्क के बाहर अगर कोई पैकेट भेजना चाहता है तो पहले तो राउटर के पास जा. तेरी ड्यूटी है कि इस पैकेट को राउटर तक भेजे, बस उसके आगे राउटर संभाल लेगा क्या करना है. Sir, यस sir, I can't understand in Hindi, sir. What is to be done, madam? I can't say anything in English. What to do? I said now in the start only ki see, okay, allow me to complete in either one of the language. Okay, then only I will come in the second part. Fine. So if at all this thing happens, then even I get लिटिल distracted बिट इंग्लिश where मतलब to आती है इतनी start कि and जो आप where to बताएंगे वो stop. समझ जाएंगे. Have patience. I was about to come in the English part as well. Just wait for some patience. Okay. Okay, if I explain in English, what will the Hindi guys do then? Hindi guys will shout कि sir English नहीं आती. So what should I do then? अरे तुम्हें आएगी तो तू एक होशियार बच्चा है, समझ ले. बाकी के बच्चों पे क्या गलती क्या है? ठीक है, बाकी के बच्चों की गलती क्या है फिर? Okay, so ठीक है, let's take from the scratch and let's understand. So I was explaining that कि when this machine, okay, first let me give the names for this. Okay, it's many time that okay I'm specifying the IP address of this. It's better let us give the name for each and every machine. Okay, why am I clicking this here? I don't want to click here. This is P2. This is P3 and this is P4. Okay, now look here. Let us say P1 wants to send a message to P3. Now the moment I add the destination IP address of P3, P1 immediately identifies that the given IP address does not belong to my network.
And literally he comes in a mode of confusion that if okay, this any IP address comes okay to him, what should he do? Because P1 knows only about the green network, because the ARP messages are coming to him and he is identifying with that ARP messages that how many machines are there in this green network. Whereas if anything which is outside the network, any of these green machines will not be able to okay go reach there. So the question is that we have to first instruct these machines that if at all any IP address comes which belongs to different network, then your duty is that you first have to take this packet to R1, and R1 will take the initiative in the later stage. What is to be done? You first report this to R1, isn't it? So something like this, if any crime scene happens in your area, what is the first thing you do? You go and report to the authorities like police. Fine. So immediately is doing the same thing. He's going and informing to the authority, which is R1 in this case. So now when okay, how to give them the instructions? You have to let them know that you have to reach to R1 first. And the problem is with both the machines. Yeah, let me say a problem is with all the end machines. So how to inform them that your first duty is you have to reach to R1. So we are informing the same by specifying the default gateway. So look here in the default gateway, I have specified, I have mentioned the IP address 192.168.2.29. Now whose IP address is this? It is the IP address of R1, okay, which we have assigned to it. So we are informing to this end machines that you reach to R1, but in reach to R1, what is the IP address of R1 in green network? It is 192.168.2.29, and certainly we are going to go in this way. Got it? And we are doing it for all other machines. So look here for P2 also. Okay, it was 3.25. Let me put it 2.25 so that they become sync in the same part. Fine. And yeah, this is okay. Fine. So now whenever we have to send a message from P1 to P3, okay, the duty is that the of P1 is that he's going to check the IP address. Yeah, let me say he's going to check the destination IP address, and whenever he checks the destination IP address, he comes to know that it is belonging to his network. Just 1 second. What is the issue that is happening? I don't know. Let me check over here. Is everything configured okay? 2.29. The PC1 and PC2 IP is same. हाँ P2 and P1 नहीं, P2 का है ही नहीं, P1 को हमने दिया है क्या? Perfect. Now it's done. Same IP address. Now, yes. Let us say P1 wants to send a message to P3, and this is the message that he has generated. Fine. Now,
The moment I assign the default gate, okay, the moment I assign the destination IP address, immediately P1 will come to know that this machine, yeah, this IP address is the one that is not belonging to my network. P1 को immediately तभी तुरंत पता चलेगा कि destination IP address जो है ये मेरे network में नहीं है. तो पहला ड्यूटी काम क्या करेगा? पहला अब इसकी ड्यूटी है that he has to report this message या he has to take this message towards R1. Okay, now same question. सर R1 का When he has to deliver the message to the destination, IP address is there and MAC address is also be specified. But Yes. I have just told that destination MAC address is belongs to which device, because it is for sure that destination MAC address is not belonging to P3. So the question is, okay, the destination MAC address which is being mentioned here, it belongs to whom? ये किसका है? R1. Continue. R1. It is the MAC address of R1 that is connected to green interface. यहाँ देखिए. So actually this is the hidden history. Okay, that is the hidden history. Now why am I saying it as a hidden history? Okay, shall I complete the process and then I will explain? Yeah, will I explain? Shall I let you know now only? No, sir. Continue. First come. Okay. So, okay, when we, okay, that's the case, then when the machine, okay, generates an IP address which belonging to the different network, he has to report this packet to R1. So when he has to report this packet to R1, he is not changing the destination IP address, but he is adding the MAC address, and he is adding the destination MAC address of R1. Okay, now how come he added the destination MAC address of R1? He has added because of this reason. Default gateway, we have specified the IP address of R1. So that's the reason MAC address, yeah, destination MAC address in the packet is going towards the R1 in this case. So the moment it goes to a switch, okay, what is the switch? Okay, recollect the concept of a switch. Switch क्या है? Switch एक hardware device है जिसकी ability है. What is the ability of a switch? Read MAC address. Absolutely correct. So the pack, look here, the packet that has gone, yeah, the message that has came to a switch, switch is reading only the MAC address. Okay, इसके अंदर जो MAC information है, the MAC information that is available inside this message, switch is reading only that MAC information. So here switch is checking the destination MAC address. What is destination MAC address? 0007 EC125401. Now switch maintains a table. What is the table name that switch maintains? MAC address table. Absolutely correct. Switch maintains a table that is called as MAC address table, and this is the command. Now look here, he checks into the MAC address table that destination MAC address is connected to my which interface? Gigaport 0/1. That's it. Routers. It's going, Routers. okay, absolutely, that's it. So S1 is going to send this message to that interface, and eventually this message will be captured by R1 because he is also connected to the same interface. Fine, got it. Now finally this message, yeah, this packet has reached to a router. Router is a superhero. Router is a Rajnikant. Okay, router is a Rajnikant. Okay, now with all due respect to Rajnikant, okay, because he is doing many things. Okay, so even router is doing many things. That's the reason. Okay, I'm comparing him, router, with a superhero. Fine. Now the moment it goes to a R1, what is the ability of R1? Router की खासियत क्या है? Router has Read the the IP address. ability. IP address. Absolutely correct. So whatever the message that comes to R1 router is reading the
IP information. And what is the IP address that he's checking? Look here, the IP address that he's checking here is, okay, this is the IP address, sorry, fine. So this is the IP address. So look here, the source IP address is 192.168.2.25 and the destination IP address is 172.16.15.43. Okay. Now, as switch maintains a MAC address table, certainly router also maintains a table, and that table is called as, okay, network table. Yeah, sometimes it is also called as routing table. Okay. Sometimes it is also called as network address. ठीक है, नेटवर्क एड्रेस टेबल नहीं बोलते, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस बोलते, ठीक है. तो राउटर, okay, looks checks this IP address into his routing table. Now what is the information that is there in his routing table? Okay, so the command is IP route, show IP route. So the moment I check show IP route, this is the information that is available inside routers. Okay, so you looked at, as I said, what is the first definition of a router? That it is connecting two different networks. So look here, router is that device who is maintaining the network information. He is interested only in maintaining the network information. So यहाँ देखो, the moment I type show IP route, look here, he is saying that there are two networks connected to him, which is the two network 172.16.0.0 and 192.168.2.0. Okay, these are the two networks that are there. Okay, now router has the ability to read the IP address. Now in this message, whatever the packet has arrived to R1, what is the IP address of this? Okay, destination IP address क्या है? Destination IP address है 172.16.15.43, isn't it? Now he is going to check this information into his Yes, sir, you are right. table. Is there any IP address available in his memory with 172.16.15.43? क्या ऐसा कोई IP address इसके टेबल में है? चेक करो, यहीं पे है. Is it visible? Is it available in his table? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, It sir. is available. Yes, sir. Available, sir. Available है, ठीक है. कहाँ available है बताओ. ये IP एड्रेस, ठीक है, जो राउटर के पास, ठीक है, ये IP एड्रेस आया है जिसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस 172.16.15.43 है, ये उसके मेमोरी में कहाँ अवेलेबल है बताओ. 16.0 के नेटवर्क में. कहाँ है? सेकंड नेटवर्क 16.0. So because it actually reads the network address and then convert it into MAC address, sir. So switch can access the MAC address. Likewise. Fine. Now my concern is that, okay, the given packet is reached to R1. Okay, and in R1 the destination MAC address is this. Okay, so in the routing table there is no, okay, IP address as such. So how come the router is going to forward this? It stores when ARP message is received, sir. When ARP message is received, but there is no information as such in his memory. Sir, it Let gives us do one directly,
transport like as whatever in the previous network address in the 192 class address. So सर ये likewise it is- 172.16.00 के अंदर नेटवर्क जो है उसमें प्रेजेंट है. ठीक है. अब ठीक है, एक बात भी मानते हैं कि 172.16.0.00 उसके अंदर है, लेकिन यही इसके अंदर है, ये राउटर को कैसा पता है? क्योंकि यहाँ पे दो नेटवर्क हैं. यस सर. ते वो फिर वही इंटरफेस की तरफ क्यों कैसा भेज रहा है? If switch doesn't send to R1, sir, if it is the same network. Okay, here I will explain it in a better way. Okay, I will explain it. You know the, okay, you are trying to explain, but I will explain it. Yeah, I will justify it in a good way. Here it is. Right? The moment any packet arrives at router, to read the destination IP address. But since destination IP address information will not be available in the router, because router is that device who is storing only the network information, he does not have any information about the host machines. So the question comes, how will the router will forward this? So this is what he is going to do. The moment any IP address comes, he reads the destination IP address. Okay, he finds the subnet mask of this. So he tries to find the subnet mask of this. So what is the subnet mask for this? The subnet mask of this will be, okay, what is the subnet mask of this? 255.255.0.0. Okay. Now, what we are going to do next? Router is that device who is performing this work. Whatever the work that we have performed, we have done yesterday now. We have done this on behalf of router. ये हमने जो कल कन्वर्शन किए थे एंड ऑपरेशन वाला, ये राउटर करता है. ठीक है, तो हम राउटर का काम हम कल कर रहे थे. So we were doing it on behalf of router actually. Okay, and okay, now router will perform this AND operation, and on performing the AND operation, this is the output. Now this output is what he is going to check in his routing table. This is what. Is there a match now? Yes, sir. Okay, and certainly Yes, he sir. checks that कि ठीक है, ये मेरे किस इंटरफेस को कनेक्टेड है. So it is connected to 0/0/1. But note that okay, in this interface we have connected one computer which is 172.16.100.100. So this machine knows, okay, the detailed information of destination. Fine, because okay, they are the one who exchange the ARP messages, and they are the one who knows the MAC address of P3. Are you getting me? ठीक है, तो अब क्या होता है? ठीक है, अब दूसरा सरप्राइज या दूसरा ट्विस्ट. ठीक है, so what is going to happen? So look here, when the router is okay, yeah, let me say when the packet is okay actually transferring from one network to another, तो जब ग्रीन से ऑरेंज की तरफ बदल रहा है या जा रहा है, तब राउटर क्या करता है? राउटर नया मैक इंफॉर्मेशन मैसेज में ऐड करता है. I repeat, router is actually adding the new MAC information, okay, when the network is changing from green to orange. Why? Because okay, till now, okay, it is something like this. From you want to reach to Taj Mahal,
Taj Mahal was your ultimate destination, but if you want to reach to Taj Mahal, you have to reach to Agra station first, isn't it? You have to reach to Agra city. So you want to say to Agra city, let us say you reach by bus, okay. Then for second bus, you have to take the second ticket to reach to Taj Mahal, isn't it? So when you're taking the second ticket, this is the second ticket that is happening from Agra to Taj Mahal. The second ticket is being shown, okay, processed. तो इसीलिए जब स्टेशन बदलता है तो नया टिकट निकालना पड़ता है, मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज होता है और इस हिसाब से ठीक है यहाँ पे ये बदलते हैं. Fine. So the machine that is connected to this interface, which machine? The machine that is connected to R1. I mean here, where is my machine? Yeah, this one. Okay. Here it is. Okay. This machine 172.16.100.100. Okay. He is the one. Okay. Who is okay replacing the new MAC information. Now look here. Source MAC address is belonging to which machine? Router second port, sir. That means Router orange interface. ठीक है, राउटर का ऑरेंज इंटरफेस. ठीक है, ये देखो 5402 5402 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका है? अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस P3 का है. Are you getting me? Yes, So ठीक है, this is the new information. Now look, note here. Okay, one more thing you have to observe that whatever the changes has been happened, yeah, whatever the changes router is doing, he is doing on the existing packet. मतलब existing packet में ही नया MAC information add कर रहा है. He is not creating a new packet and sending. On the existing packet only he is adding the new MAC information, and this process is sometimes called as append. You often see this word in computer world. Append करता है. Append मतलब क्या? Existing file में ही नया input add करते हैं. तो append का मतलब क्या? ये देखिए, ये मेरी कल की फाइल थी, इसी में मैंने आज नोट्स बनाए, तो मैंने append किया. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि नहीं, ठीक है, एग्जिस्टिंग मैसेज में ही नया मैक इंफॉर्मेशन ऐड किया, मतलब अपेंड किया. ओके, व्हिच मींस ही हैज अपेंडेड. include. Okay, including. This is what is appended. Okay, so he has added. You cannot say include. Add ही बोल सकते हो क्योंकि पुराना वाला हटा दिया और नया जोड़ दिया, तो अपेंड ही बोल सकते हो, मॉडिफाई बोल सकते हो तरह से. Replace. ठीक है, रिप्लेस. ठीक है, एंड it goes to S2. S2 is a switch which has the ability to read MAC address. This time he is going to read the MAC address, and of course the MAC information is updated. So he's going to check the destination MAC address. Destination MAC address will be belonging to P3, and this information is already being stored in the MAC address table of S2. So he knows where to redirect this message, and that's it. This is how he is redirected. So note here, okay, what, okay, router is doing so many things. Assigning the default gateway, each computer is acting as a MAC address, ability to read MAC address, and append the information, MAC address. So देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे, ठीक है, I will add one more feature. ठीक है, the fourth feature is that, ठीक है, here I will just write maintains, ठीक है, this, and fifth one is appends MAC information. Okay, so these are the things that router does. Fine, these are the things that router does in this. I will add one more.
isn't it? एंड ऑपरेशन ही करेगा ना. Yes. एंड ऑपरेशन करने के बाद ही. Okay. Yes. So this is the insights of network. If you understand this process, then you have understood the fundamental concepts of network. So basically, okay, it's not about router, it's about each device. How come switch is working? How come router is working? How come the other end switch is working? And how come the machines are working? Look at the behavior of this. Default gateway, MAC address table, routing table, okay, appending, changing of MAC address, traversal of packet, and reaching to the destination. And when the destination is received, the destination will be responding back. Look, he is responding back the message. So when he is responding, again the IP addresses will be reversed. Okay, so one who has attended my networking class. By the way, how many of you have attended my networking class here? मेरा networking class किसने बैठा अभी तक? Anyone can give me today's recording because I leave the class because my baby is sick. No, go ahead, Pranali. ठीक है, object किया. No issues. ठीक है. हाँ, my question was that how many of you have attended my N plus class? Raise your hands. मेरा networking class कितने लोगों ने बैठा है? या कितने लोगों ने बैठे हैं? Which has to take in 9:30 to 11:30. Akash, only one. Okay. ठीक है. तो जो no, ठीक है. The one who has attended my networking class, okay, very well knows कि packet ठीक है जाता कैसा है reverse में. So the IP addresses are changing. The IP addresses are switching from source to destination and destination to source. Okay. So the thing IP addresses are swiping. Okay. And how they are swiping, you guys better knows. So when it swaps, okay, the IP address comes back to R1. So R1 to S1 and S1 to P1. So this is what the process happens. Okay, this is what the process happens over here. Okay. अब कुछ डाउट है तो बताओ. Okay, now if anyone has any doubt, feel free to ask. सर वो प्लीज रिपीट कर दीजिए ना. R1 से S2 के लिए कैसा क्यों जा रहा है? सर वही है सर कि समझ में नहीं आया करके नहीं है, लेकिन समझ में आया लेकिन दिमाग में नहीं बैठता. R1 से सेकंड विंग का तरफ कैसे गया? इसे ऐसा देखो, ठीक है. इसे ऐसा देखो, ठीक है. ठीक है. ये एलो नेटवर्क जो है, ठीक है, ये आगरा है. ओके. ठीक है. दिस एलो नेटवर्क इज नथिंग बट आगरा सिटी. ओके. और ये जो आपका डेस्टिनेशन है दोनों में से, ठीक है, ये बोलो ताजमहल है. ओके, दिस इज अ ताजमहल. ठीक है. तो आपको अगर ताजमहल को जाना है, ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, P1 से ताजमहल को जाना है तो हमें पहले कहाँ पहुंचना है? ठीक है, हमें पहले आगरा पहुंचना है. आगरा. तो मैं मेरे शहर से पहले आगरा की तरफ पहुंचता हूँ. ये देखो, मैं पहले आगरा की तरफ पहुंच गया. ठीक है. और आगरा में पहुंचने के बाद, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने आगरे तक का टिकट निकाला. तो आगरे से अब मुझे क्या करना है? आगरे से ताजमहल का टिकट निकालना है. तो बंदा तो वही है. ठीक है, बंदा तो है, तो मैसेज तो वही है, लेकिन अब टिकट कहाँ से कटेगा? दूसरा टिकट कटेगा आगरा से ताजमहल का. ठीक है. तो दूसरा टिकट कटना है तो इसी इंफॉर्मेशन ऐड होगा या नया टिकट ऐड होगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस R1 का रहेगा, ऑरेंज वाले का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ताजमहल का रहेगा जहां हमें पहुंचना है. आई बात समझ में? ठीक है. तो जैसे ही ये स्विच के पास पहुंचता है, मैसेज को देखेगा कहाँ पहुंचना है. ठीक है, P3 के पास, बस P3 के पास ऐसा था. सो हमें ये समझना है कि हम जब भी कोई क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एंशिएंट हिस्टोरिकल पैलेस.
ऐतिहासिक धरोहर, मॉन्यूमेंट को क्या बोलेंगे आप? मुझे पता नहीं। धरोहर। धरोहर, ठीक है। तो ऐसे ही कोई, ठीक है, ऐतिहासिक जगह बोलो यार सबसे सबसे, ठीक है, ऐसे कोई ऐतिहासिक जगह पे जाते हो, ठीक है, और ये पहले तो सुने। ठीक है आप, ठीक है, वो जगह कहाँ पे है, पहले उस शहर में जाना पड़ेगा और फिर वहां से उस जगह पे जाना पड़ेगा। ठीक है? तो मान लीजिए आप कुतुब मीनार जा रहे हो, ठीक है, लेट अस से यू वांट टू गो टू कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब सर मीनार को जाना है, देखना है, तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है, आपको यहाँ से कुतुब मीनार जाना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पहले आपको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। तो ये देखिए R1 जो है ये मेरा दिल्ली शहर है और दिल्ली शहर से, ठीक है, दिल्ली बस स्टॉप से फिर मुझे, ठीक है, कुतुब मीनार के लिए जगह टिकट काटना पड़ेगा। तो वहां से मुझे, ठीक है, बंदा वही है लेकिन टिकट नया कटेगा, तो नया टिकट पे, ठीक है, नया बैंक इंफॉर्मेशन ऐड होगा। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग एडेड। प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस, ठीक है, बहुत ही आवाज आ रही है प्लीज। हाँ, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। आई नो, ठीक है, शुरू में समझने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसे लिख के रखें, ठीक है, नोट डाउन करके रखें, तभी ये समझ में आएगी। ठीक है, ये एक तरह से आदत है, ठीक है, लिख के रखें, नोट डाउन करके रखें तो आएंगे, ठीक है। ये रोज का रोज तो रिवीजन तो मैं करूंगा ही, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिन्हें बिना रिवाइज करे मैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, तो ये से फिर से रिवाइज करके देखिए। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन सी यू ऑफ एट दिस मोमेंट, ठीक है। कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स यू राइट, ठीक है। सो बेसिकली, ठीक है, आपको इन शॉर्ट ये समझना है, नेटवर्क बदलता सर है, वो जो आपने लिस्ट में ठीक है। जो आईपी एड्रेस अगर लिखा था, नेटवर्क जो ग्रीन से मतलब ऑरेंज जा राउटर की रहा जो है तो टेबल थी मैक उसके अंदर जो आईपी इंफॉर्मेशन एड्रेस चेंज था होगा। वो उसमें ये वाला नेटवर्क वो अगर आईपी एड्रेस वही नहीं है, था ना, ये 72 मैक 116 इंफॉर्मेशन चेंज 15.43 वाला। नहीं होगा, एज सिंपल एज इट इज, तो ये ठीक सर है। कुछ ट्रिक्स ये है, कहाँ से आया था वहां सर से हम आईपी? याद कर सकते हैं। यस, सर मैक एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का चेंज होगा? R1 के पास जाता है तो ओके, चेंज होगा, यस सर, जब R1 के पास पहुंच जाता है वहाँ सोर्स और ठीक डेस्टिनेशन है। दोनों का मैक चेंज होगा। दोनों का चेंज होगा, ओके ठीक है, क्योंकि नया मैक एड्रेस अब R1 का आएगा, सर, सोर्स मैक R1 का हो जाएगा और डेस्टिनेशन P3 का। P3 का होगा मैक एड्रेस, लेकिन आईपी एड्रेस यस सेम सर, ही सेम रहेगा। रहेगा। यस सर, ओके सर। मम्मी से ले ले। ठीक है, तो जी ये कहाँ से है, ठीक है, जब भी हम पैकेट राउट, ठीक है, P1 से P3 को भेजते हैं तो ओके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस P3 का ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये पैकेट R1 की तरफ आता है, ओके ठीक है, R1 देखेगा, ठीक है, R1 के पास ये जो पैकेट आता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को पढ़ेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, ओके ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 172.16.15.43, ठीक है, जो है इस वाले मशीन का। तो इसे फिर भेजना कैसे है, क्योंकि ठीक है इसका आईपी एड्रेस तो इसके मेमोरी में है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो बस नेटवर्क एड्रेस है। तो पहले इस मशीन ओके का सबनेट, इस आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का सबनेट ओके मास्क ओके सर। निकालेगा और सबनेट मास्क निकालने के बाद इसका एंड ऑपरेशन करने के बाद नेटवर्क एड्रेस निकालेगा और नेटवर्क एड्रेस कंपेयर करने के बाद वो ओके ये देखेगा कि ये नेटवर्क एड्रेस मेरे कौन से इंटरफेस को कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ उसे पता चलेगा कि ये मेरे 0/0/1 इंटरफेस को है, ठीक है, उसी इंटरफेस पे ये कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस ये है बस, और यही कंप्यूटर का मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस में ऐड होगा और यही कंप्यूटर हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी निकाल के देगा, राइट। क्योंकि आर्क मैसेज के द्वारा, ठीक है, आर्क मैसेज के द्वारा, ठीक है, दे नो ऑल द ओके इंफॉर्मेशन ऑफ दिस,
Fine. Sure. Anything else? Sure. Now, this was all okay about routers and the basic structure of a router. Okay. Now, in order to understand this in a better term, uh, let me do one thing. Let me delete this part and let me save this as well. So let me save it with day 6 because today is day 6 and this is what I have saved. Okay. Now let's explore the practical part of this. Okay. So okay, I am here. Okay. Now my intention is to make your knowledge a foolproof knowledge. आपका जो knowledge है उसे foolproof करने का ही intention है. तो ये देखो, I am into my laptop. ठीक है, ये मेरे laptop का terminal है. I type the command as ipconfig/all and looking at the IP. Okay, this command. What is my IP address? This is my IP address. Okay, so let's try to create the scene. ठीक है, इसे create करके समझने की कोशिश करते हैं. Fine. So here in this topology, okay, this is my laptop. Okay, and the IP address is 192.168.1.9. Okay, so let's quickly assign it. Default gate. Okay, so 192.168.1.9. Okay, what is the subnet mask for this? 255.255.255.0. Perfect. Can you give me the default gateway for this? It is not connected to it. No. There is no any router which is not connected. All the end machine will be having a default gateway. Look here. Okay, it is 192.168.1.254. Okay. Now what does it mean, guys? Okay. What do you mean by default gateway? There is one router that is existing. I am connected my laptop with this router. Let us say this is just a tentative diagram. However, there might be a possibility that okay, between this switch might also get exist. I'm not denying that, but it is just a tentative diagram to give you an overview. And okay, what should be the IP address of this thing? Okay, if it is connected to the router, what is the IP address should I assign here? Default gateway for the laptop one. Which is 1.254. So this is how we can trace, okay, the network router IP address and the machine IP address. And after this, okay, let us say if I want to get connect to what you say any network. Okay, the router is connecting up. It's not connecting. Okay, website. Look here. So he's connecting now. Okay. So this is how I connected. So okay, basically, okay, this side, the other end of the router is connected to some other network like Google, Facebook, whatever it is. I don't know. But this part, okay, the other end of the part, I'm going to call it as cloud. So cloud, okay, is not the cloud which we are learning today. आज के ज़माने में जो cloud का concept है, ये वो नहीं है, ठीक है? Let us do one thing. Let's not put it as cloud. You might again get confused. Let's make it a web. Okay. So this is how in this web, the Facebook server of Google, the server of Facebook, the server of Amazon, all these are connected. तो मेरे नेटवर्क का जो कनेक्शन है या मेरा जो नेटवर्क Yes, है, sir. मेरा इलाका इतना ही है. इसके बाहर का इलाका, ठीक है, वो राउटर देखेगा.
So this is how the connection is been happening between each and every one. Okay, if you are connected with mobiles, okay, try to fetch the IP address of that. Try to take away the default gateway of that. Of course, default gateway रहेगा. नेटवर्क के सेटिंग्स में या वाईफाई के सेटिंग्स में जाके चेक कर लो डिफॉल्ट गेटवे क्या है. And try to trace the path. Okay, the more you trace, the more you track, the more you trace, the better you will be getting the information of what the knowledge is. Okay, तो इस तरह से हम, ठीक है, इसे रिक्रिएट करके समझ सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क कहाँ कनेक्ट है. Okay, got an overview how the things are happening in a network. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Nice to hear that you are understanding. Now, once we came to know, once we understand the features of a router, the next thing is that we have to understand the next topic. Yeah, we have to understand about IP addressing also, because we have understand about network bit, we have understand about host bit, we have understood about the router connecting two networks. All these things we understood, but let's try to understand the IP address in terms of mathematics. Mathematics के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं. If this is the IP address, yeah, let me say if this is the network address, then in this table, okay, how many IP addresses exist? इस टेबल में कितने IP addresses exist कर सकते हैं? तो अगर इसका पता करना है तो कैसे करेंगे? 255 sir. 192.168.25.255. Okay, so from 0 to 255, 256 are the IP addresses that are existing. Okay, now take the example of this one. Okay, 172.16.0.0 to once. Okay, how many IP addresses exist in this? Yes, sir. In this network, how many IP addresses exist in this? Okay, let us put the things in another way. Okay, no need. Okay, nothing to. 255 into 255 addresses. 255 into 255 कितना आ रहा है ये? 255 into 255.255 510. into 256. इतने नहीं आएंगे फिर. 255 into 255. 65,025. समझे? Yes, sir. Sir, because ठीक है. zero is also. Okay, now third question. ठीक है, 10.0.0.0. How many IP addresses exist in this? Pardon, sir? 256 into 256 into 256. It's a cube of 256. Actually, you know one thing. Okay, you have given me the new formula for calculation. It should permutation and combination. Absolutely. Till now, ठीक है, I am thankful to you all कि आपने कुछ शॉर्टकट तरीके से मुझे आंसर दिया है, जो मुझे भी नहीं पता था. ठीक है, अब तक जो मैं कैलकुलेशन करता था वो कुछ इस तरह से था. ठीक है, मैं कुछ इस तरह से करता था. 256 into 256 into 256 नहीं करता था. मैं करता था कुछ इस तरह. ठीक है, 2 to the power of 24 करता था. ठीक है, ये देखो मैं पहले इसका आंसर कॉपी करता हूँ 256 होल क्यूब का. ठीक है, मैं कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करता था. ठीक है, 2 to the power of 24, जो कि आंसर यही आता था. ठीक है, तो कभी कभी कुछ बच्चों को ये समझ में ही आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपके वाले मेथड से अब पूरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है.
सर और एक बार रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा मिस हो गया। सब तरफ मिस हो गया। क्लास सी से स्टार्ट करते हैं। क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस ले या कोई भी नेटवर्क एड्रेस ले, आईपी एड्रेस लेने से अच्छा नेटवर्क एड्रेस ले, तो क्लास सी के नेटवर्क एड्रेस में कितने कितने आईपी एड्रेसेस एक्चुअल में रहते हैं या एक्चुअल में अवेलेबल है, इसका काउंट कैसे करोगे? तो ये ठीक है, ये है कि क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क में जाते हैं और लास्ट का जो ऑक्टेट है वो होस्ट में जाता है। 256 करेक्ट है। तो होस्ट में अगर जाता है, ठीक है, तो उस टेबल में नेटवर्क के वैल्यूज फिक्स रहेंगे। नेटवर्क वैल्यू विल बी फिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो व्हाट इज गोइंग टू चेंज? द होस्ट इज गोइंग टू चेंज. So if that is the case, it will be 192.168.25.1. Okay, on the next row, 192, 168.25.2. On the third row, 25.3, 25.4. Okay, तो ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है, ये तब तक चलेगा जब 255 ना आ जाए। ठीक है। तो 0 से लेके 255 अगर हम काउंट करते हैं तो कितने बिट्स रहते हैं या कितने आईपी एड्रेसेस रहते हैं? 0 वाले को मिला के, तो ठीक है, तो क्लास सी में 256 ठीक है आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, वही अगर ठीक है क्लास बी का नेटवर्क एड्रेस लेते हैं तो क्लास बी में कितने अवेलेबल है? उसमें उतने ही 256 into 256. ठीक है, पहले ऑक्टेट का 256 और दूसरे ऑक्टेट का 256, तो 256 इंटू 256 मतलब ठीक है 65,536 आईपी एड्रेस अवेलेबल है जो 0.0 से स्टार्ट होते हैं और 255.255 तक अवेलेबल। यस सर। यस सर। ठीक है, उसी ठीक है अगर क्लास ए का कोई नेटवर्क एड्रेस है तो इसमें कितने हैं? 256 इंटू 256 इंटू 256 मतलब 256 होल क्यूब। ठीक है, और अगर ये करते हैं तो वो आईपी एड्रेस की संख्या कितनी है? लगभग 1.6 करोड़, 1,67,00,000 ठीक है, 77,216 ठीक है, तो ये रेंज है। ठीक है, तो तीनों क्लासेस के अवेलेबल आईपी एड्रेसेस ये हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ऑल ऑफ यू गॉट क्लियर्ड इन दिस? ओके, यस सर। यस सर। द इंग्लिश ऑडियंस अंडरस्टूड? यस सर। Fine. Now, okay, look one thing. Okay, try to understand one thing. We got the range of IP addresses of all these things. So class A has any IP address of class A. You take any network address of class A. Sorry, class A. 1,67 lakhs IP addresses are available. You take any IP address of class B, 65,536 IP addresses are available. You take any network address of class C, 256 IP addresses are available. Okay, now the truth is that we cannot assign the IP address on our own. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मर्जी से कोई भी IP एड्रेस ऐसे ही असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इनफैक्ट वी हैव टू परचेस एन आईपी एड्रेस, हमें आईपी एड्रेस परचेस करना पड़ता है। You know, so if this is my network, green network, okay, I have to purchase an IP address. I have to purchase 2.25, 2.3, 2.25, all this. So which is the organization from which we have to purchase this IP address? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमें ये आईपी एड्रेस परचेस करने पड़ती है?
उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, the name of that organization is called as IANA. Okay, and the full form of IANA is Internet Assigned Numbers Authority. So I go on to this website, I click on IP addresses. Here it has specific regions like Africa, USA, Europe. We belong to Asia Pacific. I click on Asia Pacific region. I click on get IP address, and the moment I click on get IP address, I have to fill this form, and then they are going to give me an IP address. Then I can assign to my computers. This is the whole process. Fine. So the moral of the story is that we have to pay for an IP address. Okay. But when we are paying for any IP address for IANA, how does the IANA works? IANA says we are not going to give you the IP address for individual machines. Rather, you have to purchase for the entire network. Now, what do you mean by entire network? Wholesale. What do you mean by wholesale? Bulk mein. What do you mean by bulk? Matlab, they give the network address of 192.168.25.0, and in that 25.0, okay, all IP addresses are yours, like 25.1, 25.2, 25.3. So 25.255, this entire IP address, bunch of IP address is what you have to purchase. That is the condition of IANA. Okay, got Yes, the sir. okay, got the process. Now let us say, okay, if there is a company which is called as Apple, we all know about this company. Okay, and about, if we talk about this company, okay, this company produces very good gadgets. ठीक है, आईफोन हो, सेल फोन हो, लैपटॉप हो, इनके सबसे बढ़िया गैजेट्स हैं. Fine. Now, if they said that we want an IP address for our computers, so they approach IANA. So the moment they approach, they got the IP address. Let us say ki 99.0.0.0. This is the IP address that they got. Now, in this IP address, how many, in this network address, how many IP addresses are available for it? It is 256 into 256 into 256, which is 1.6 almost crores. 1.67 crores approximately. Now, okay, look here. Okay, does any company has 1.6 crores of computer in the network? 300. Okay, क्या ऐसी कोई कंपनी है जिसमें 1.67 करोड़ आईपी एड्रेस अवेलेबल है? मैंने तो नहीं देखी. ठीक है, तो अगर इतनी यूज करनी ही नहीं है, then why come we have to pay for this? Why does Apple company has to pay for so many IP addresses when they are no more using it? On the other hand, let's take one more example. मेरी एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ABC. I am in need of 300 IP addresses. But when I approach IANA, they give me the IP address as 192.168.199.0. Now, in this IP addresses, how many, in this network address, how many IP addresses are available in this? 256. 256. What is my requirement? 300. 300. 300. So I am, okay, I am almost short of 45. Yeah, 46, I don't know. Almost 44. I am short of 44 IP address. So in one case, okay, I am running short of IP address. And in another case, there is a wastage of IP address. Yes. Fine. So both these situations has to be managed. Got my thing. And in order to manage it, we are using, okay, with the concept of subnetting. Okay, so subnetting is our next topic. And what is subnetting? It's better that I take it on Monday. Okay. And now why Monday? Because subnetting can't be explained in next 15 minutes. And certainly, okay, I have not given you any break. So break to banta hai.
तो 15 मिनट का ब्रेक देके खत्म ही करता हूँ, 15 मिनट पहले ही छोड़ता हूँ, तो आप भी मैं भी आराम से बैठ सकता हूँ, आप भी बैठ सकते हैं, सही है ना? तो दिस इज व्हाट I will explain you from Monday what is submitting. Okay, mean